Okay, Urvish, let's proceed ahead with your HR snap for Gas Authority of India Limited. We start with your very brief introduction. So, Urvish, please go ahead and introduce yourself. Okay, sir. A very good evening, sir. My name is Urvish Jani. I belong to Vadodara, Gujarat. My father is a civil engineer and he works as a site manager in a private firm. My mother is a homemaker and I have an elder brother. Sir, I graduated from the Maharaja Sayajirao University in 2021 in electronics discipline. Sir, basically during my engineering, I created many projects, mini projects I can say, and one major project. And all those projects were basically surrounding to the concept called embedded systems. Sir, I'm also interested towards joining some NGOs for social cause, and I'm also interested in football. And sir, right now I'm working in an IT company. Right now I'm on the training base period. Okay, so you are doing this training for? Basically, sir, it's a part of the employment. First 3 months they provide training to everyone, basically. So it's a 3 months training, and it's almost 1.5 months completed. So what you've done in the training so far? Sir, basically I belong to electronics, and this is an IT company, though I had some interest towards coding and all. So basically they provide very fundamentals to everyone, basically from CS background, or even if you are from non-CS background. So basically, sir, I've learned like Java, basics of Java, basics of database management, basics of SQL, and basics of Microsoft Power BI, and a lot more things, sir. Okay, so now tell me, Urvish, why not pursuing career in this direction only? Sir, basically aspirants go for the GATE examination for majorly two reasons. One is for higher studies, higher education, and another for to be the part of the public sector units. And since the first day of my GATE preparation, I was very clear that my interest is towards joining a public sector units. So basically, I prepared for the GATE examination in that particular direction only. Though after my GATE results, there was an opportunity for me to start working, and so that's why I joined the organization. And then after I got the call from the GAIL, and that's why I appeared for. So have you learned anything related to management things in the organization or organizational hierarchy during your training? No, sir. Right now, basically, they provide us basics of very technical things, basics of coding, algorithms, how to use some softwares, and yes, they also provide some communication skills, email writing skills, basics of whatever corporate requires. Okay, now tell me, if you are to write an email, professional email, complaining someone in the organization, how shall you do that? Procedure. Yes, sir. Sir, basically, first of all, I would mention very politely that what is exactly going on. Then I would even try to provide what can be the possible solutions, what I can do towards it, and I would also ask for forgiveness for the inconvenience which has been provided by me or my team. So okay. No, tell me, why do you keep the higher authority in copy, in CC? Why do you do that? If some higher authority is there, why will you keep them in copy when you mail somebody? Yes, sir. So basically in CC, when we put a person email ID in CC, basically the motive behind that is to keep them basically to keep them in knowledge that what is happening. It is not basically to basically the message is not intended towards them, but basically to tell them that what is going on, to keep them informed, and that's why we have to put them that so that the procedure is very clear to them. Okay, Urvish, I want to know how this training period of 3 months will helpful for you in your job in GAIL once you join.
Sir, I would like to say that right now these 3 months are very hectic. Basically, we are very packed with schedules. Every week there is assignments, assessments, and we have to clear the examinations. So basically, right now, what I learned in these 1.5 months, I can say the time management. I'm learning, and also I am learning very new technologies that was not included in my curriculum in my 4 years of engineering. So I'm also they are also teaching us how to learn quickly, how to manage yourself, and how to manage your time. So basically, I think, sir, in these 3 months of period, these qualities like time management, quick grasping skill, which will definitely help me uh, pursuing the GAIL Okay, ordinary. what do you think is the future of gas? Um, Sir, right now we can see that electric vehicles are in a trending. Basically, many EVs are trending, and we also see that these kind of electric vehicle industry is in very premature stage. It will take many years. But sir, I can say that gas has very diversified applications in many domains, right from industrial to domestic to automotive to power plant to many applications are there. So I can say that yes, it will take many years, but after many years, I can say that it will be obsolete. But I'm not thinking that it will be completely eliminated from all the applications. Yes, it will get replaced in many sectors, but it will take a lot of time, in my Okay, opinion. can you tell me some places where gas is uh, directly sold to customers? Like petrol pumps, mein petrol is sold. Do we have gas stations also? Um, Sir, what I can think of right now is, sir, the CNG gas people go to fill the tanks in CNG. So basically, that can be considered in this. Mm. And So, do you know some of our customers, Purvish? sir, I know some customers, and I would like to mention some fertilizer plants basically. That is RFCL and NFL, that is called as the Rashtriya Chemical Fertilizer Limited and National Fertilizer Limited. These two are basically customers of GAIL. GAIL basically provides natural gas to them, and these fertilizer plants eventually produce um, urea, ammonia, and GAIL also provides the gas to the power plant station, and then the power plant station basically produce around 4,000 megawatts of energy, electricity. So basically, GAIL provides them. Okay, Okay, Urvish, can you convince me that you are the right candidate for this particular profile? sir, I think in any kind of employment, the employer is basically looking for some kind of personality traits, and in my opinion, those personality traits can be: an employer should be hard worker, he should be honest, he should be committed, he should be loyal, and moreover he should be sharing some goals and visions of the organization. He should be sharing them along with the organization. And I believe, sir, uh, in my opinion, I have these kind of personality traits to a moderate level, and I can assure you that I will be an asset for the organization. So I think so, um, I'm suitable for this organization. Okay. Okay, Urvish, let me give you the feedback of this HR. So I think, Urvish, you need to identify from where they can ask you questions. The moment you end up your introduction at your training, they are going to ask you about training. And they want to see when you're doing training, are you vigilant enough to see the organizational structure? What actually is going on there? And are you acquiring those managerial skills also, which actually are supposed to be there? So other than the learning training part, और क्या सीख रहे हो तुम? इस पे वो पूछेंगे आपसे. Okay. गेल के बारे में आप क्या जानते हो? गेल आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंपनी है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है. ये तो खत्म हो जाएगा, तो तुम क्या सोच के आ रहे हो और क्यों आ रहे हो? इसका फ्यूचर तो नहीं है एंड ऑल दिस थिंग्स. तो तुम्हें ये बताना पड़ता है कि सब फ्यूचर है, कम से कम अगले 50 साल तो है. Okay. और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, नो डाउट ग्लोबल वार्मिंग ओरिएंटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी में इंडिया की. तो तुम्हें एक ऐसी कंपनी में काम करने जा रहे हो जो इंडिया की इकोनॉमी और हेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल के साथ डील करने वाली है.
पहले अपने आप को कन्विंस करो, फिर उनको कर पाओगे कन्विंस। ओके। और फिर आप में ऐसे क्या ट्रेड्स हैं जो आपको सूटेबल बनाता है इस जॉब के लिए? सर मैं वो बोल सकता हूँ ना कि मैंने गेट की प्रिपरेशन करी थी एंड आई वाज वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स पीएसयू, ऐसा बोल सकते हैं ना कि मतलब उसका हाँ, बोल नेगेटिव सकते हैं इम्पैक्ट गेट रोल नहीं है। इसमें। हाँ मतलब उनको ऐसा ना लगे कि यार इसको पीएसयू ही चाहिए, उसको हायर एजुकेशन इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता ना उसको। नहीं नहीं, दे डोंट बॉदर। सी अनलेस अंटिल उनको मेन काम से मतलब है कि आप गेल कर में जानते हो क्या सोच के आ रहे हो, उनको ये चाहिए। ओके सर। एक्चुअली क्या है ना, हर आदमी ये चाहता है, जैसे अगर मैं YourPedia में तुम्हें रिक्रूट करूं तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें YourPedia का कुछ पता हो। हम्म। तुम बोलते नहीं सर मैंने तो कभी वेबसाइट भी नहीं देखी है आपकी, तो दैट शोज कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अगर तुम मेरे को दो बात बता दोगे, सर मैं YourPedia में इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बिकॉज आई एम इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे को अच्छा लगेगा सुनने में, मेरे को तुम्हारा जेन्युइननेस रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज द पॉइंट व्हिच आई एम टेलिंग। The guys on the other side of the table, they have spent their career in GAIL, so they want you to tell them something about GAIL, and that you can tell only if you have done some homework. श्योर सर। सो मतलब आप बोल रहे हो कि एनर्जी सेक्टर और नेशनल डेवलपमेंट का पता पॉइंट। होना चाहिए ना यार, मतलब अगर तुम्हें मैं बोलूं कि जैसे तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, जॉब कर सकते हो, तो तुम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब पता करोगे ना। सर मैंने ये पॉइंट्स प्रिपेयर करा था पर इस टाइम पे एकदम मैं हाँ, थोड़ा कोई नहीं, पीएसयू के प्रैक्टिस साइड। इसीलिए होती है। हाँ पीएसयू के साइड थोड़ा ज्यादा मैं चला गया था। दिस इज द रीजन वी डू दिस प्रैक्टिस नो। ऐसा। चलो और करते सर, रहो। हाँ सर एक सवाल आप मैंने जो लास्ट किया था ना एचआर का स्नैप आपके साथ, तो आपने ये सवाल पूछा था कि ये जो पाइपलाइन का नेटवर्क गेल ने रखा है इसका इतना क्या बड़ा। करेंगे? हाँ तो सर मुझे बहुत डाउट हुआ तो मैंने इंटरनेट चेक किया। फिर गेल में मेरे भाई के दोस्त काम करते हैं ना, उनको कॉल करके मैंने पूछा कि यार क्या कर सकते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि यार ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि गेल का एप्लीकेशन जो है ना गैस का, वो इतना जल्दी नहीं हो सकता मतलब। हम्म। तो वो बोल रहे कि तुम टेंशन मतलब तुम्हें ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे, वो सब ऐसा ये होगा। सवाल तो पूछा गया है। मैंने बोला कि यार। सवाल पूछने वालों का तो मुंह आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन और उनका आंसर भी सही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब इसका आंसर इस तरीके से दिया जाता है कि सर, as far as I know, next 50 years, India's energy needs are to be met from gas only, gas and oil. And I'm very sure next 50 years में we will be utilizing this infrastructure. जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं एक फ्लैट में रहता हूँ सपोज, और उस बिल्डिंग में 10 फ्लैट 50 फ्लैट हैं ऐसे ऊपर को, जो गिर जाएगी बिल्डिंग तो जमीन किसकी होगी? दिस इज अ क्वेश्चन समटाइम्स विल कम टू योर माइंड। यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? दिस इज अ पीस ऑफ लैंड जिसके ऊपर वर्टिकली हमने 50 फ्लैट क्रिएट कर दिए, अब वो गिर गई, अब वो लैंड किसकी है? सो उसके लिए तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा गिर गई। फिर तब जब तक 50-100 साल के बाद आएगा टाइम, तब देखेंगे, अभी तब तक तो यूटिलाइज हो जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली। क्वेश्चन तो पूछा है, ये बहुत पूछा है पिछली बार। मैंने सर स्पेशल कॉल करके उनको पूछा कि यार मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है, आप कुछ गाइड करो। तो वो लोग बोले कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता ऐसा। यही बोलना जो मैंने आपको बताया पक्का कि पक्का। सर इन माय ओपिनियन, और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल चुकी है ना 2070 तक हम्म। नेट जीरो कार्बन हमें अटेन करना है, मतलब 2070 तक तो गवर्नमेंट बोल रही है हम्म। कि हमें यूज करना है, तो अभी 50 साल हैं तुम्हारे पास, एंड दैट इज सफिशिएंट टू यूटिलाइज सम इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी सर मैंने ऐसा सोचा था कि जब गेल को ऐसा लगे कि अभी ये सब ऑब्सोलेट हो जाएगा, तो क्या वो लोग ऐसा प्राइवेट प्लेयर को कुछ सेल करे या कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे का। को उस डायरेक्शन में तुम्हें जाना ही नहीं है। हाँ मुझे ये वो। क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है, जो तुम्हारे दोस्त आंसर कर रहे हैं वो सही है, लेकिन तरीका सही नहीं आंसर करने का। वो ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो पूछा गया है, हाँ पर पक्का। ये है कि वो आंसर भी यही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पर आप वैसे नहीं ना बोल सकते सर ऐसा तो कुछ नहीं होगा। सही है सही है। इंटरव्यू में तो ऐसा नहीं बोल सकते, ये सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो उसका तरीका क्या है आंसर करने को? ये कि सर बाय 2070 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज केप्ट अ टारगेट फॉर इटसेल्फ फॉर नेट जीरो कार्बन। That means we are visualizing next 50 years energy need in India, and in my opinion we will be utilizing this infrastructure for next 50 years. बड़े खुश हो जाएंगे वो आंसर सुन के। That is how you have to give this answer. यस सर। तो सोच, मतलब वो ये चाहते हैं कि तुम्हें पता हो कि तुम लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो। हम्म। जो तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब इसी को आंसर ऐसा क्यों लगता है भी ऐसे कुछ नहीं होने वाला, तुम अपने दोस्तों से पूछा ऐसा क्यों नहीं होने वाला, कुछ बताओ, तो जो वो आंसर देंगे दैट इज आंसर। तुमसे पूछा ऐसे क्यों नहीं होने वाला है, कुछ बताओ, तो बोलेंगे यार अभी तक तो हमें एनर्जी चलानी है, रिक्वायरमेंट है। दैट इज हाउ, राइट।